but Dr. Gaurav Garg is a co-founder and head of digital initiatives, StudyIQ, somebody who is very prominent and well known as far as the education circle is concerned, a prominent YouTuber himself. Dr. Gaurav Garg, give us a sense. Do you think that going forward now, really, education online, education through platforms on YouTube like yours, that these are going to be the way education will shape up in a country like India? I think we were already moving towards online from offline. What COVID has done is just accelerate the pace of that. We were already moving towards online. And going forwards, how much will offline return depends on the recovery rate. Like if there is more time, like for example, even if 2021 also there is a COVID, and now we already see there are 2 more variants. So if there is a lockdown in 2021, then I think we'll be having 2 years where students will be completely away from offline. And in such a scenario, they will be much more adaptable to online. But if the vaccines they work effectively, if we get rid of COVID, then I think the classrooms will be back. We can already see that, especially in the coaching space, now the classrooms are getting opened up, and almost every institute is back. So it depends. It depends how much interval there is before we can get rid of COVID. Right, absolutely. That is going to be a major factor. But Dr. Gaurav Garg, do you think that we already had a lot of existing gaps and divides when it comes to the kind of, the urban students, the rural students, the rich students, the poor students, the government infrastructure versus the private school infrastructure? Moving online, has it really helped bridge this gap, or is this gap kind of become more complicated now? That's a very fair point. I think technology is a great leveler. It always has been. But in this scenario, we can't say so. I think here the poor students are feeling left out. I mean, we are talking about a scenario where to consume the content, at least the person should have a mobile phone. That's the bare minimum necessity, right? You should have a mobile phone, you should have internet. With most of India, the per capita income, and those states, students cannot take the advantage of this digital revolution. So I think we have been caught off guard, if I can use that word. We have been exposed in a lot of ways that India versus Bharat is coming to the fore now. And it's just that the students who were already elite, who were middle class, they are getting better. Whereas the ones who have no way to consume the content are getting left out. So this is in fact not bridging the gap. It is rather increasing that chasm between the two. That's a very fair point, and it's one of concern. Dr. Gaurav Garg, would you like to come in on that? Yes. स्मिता, मुझे लगता है ये एक सबसे अहम सवाल है. इनफैक्ट मैं पिछले साल एक वर्कशॉप मैंने किया था जहां दिल्ली के स्कूल टीचर्स को मैं ये बता रहा था कि डिजिटल कैसे बने. तो अचानक वहां पे एक टीचर खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम आंसरेबल होते हैं, हम सीबीएसई के सिलेबस को आंसरेबल होते हैं, हम एनसीईआरटी को आंसरेबल होते हैं, आप लोग किसको आंसरेबल हो? आप कुछ भी पढ़ा दीजिए कल. और मेरे पास सच बताऊं इस बात का कोई जवाब नहीं था. मैंने उनको बस यही कहा कि अगर हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो हो सकता है एक बार हम सब्सक्राइबर और व्यूज ले आए, लेकिन वी विल बी फाउंड आउट इन द लॉन्ग टर्म में वो चीज नहीं चल सकती. हम अपने आप को आंसरेबल है. मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि खास तौर पे जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं या जो जिन्हें बहुत ज्यादा डिजिटल का एक्सपोजर नहीं है, वो इस चीज में ट्रैप हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया, वो देखेगा, उसने कोई टॉपिक सर्च किया और इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को क्या पता उसके लिए क्या अच्छा है. हो सकता है वो एक ऐसे टीचर को चुने जो जिसके साथ वो दिल से कनेक्ट हो जाए, यानी इमोशनल बातों से कनेक्ट हो जाए, लेकिन उसमें वास्तव में वो गुण ना हो पढ़ाने का. ये भी पॉसिबल है. कई बार ये भी पॉसिबल है कि कोई टीचर कॉमेडी वगैरह अच्छी करता हो, उसकी क्लास नीरस ना हो, तो बच्चा ऑब्वियसली, मान लीजिए आप कोई बच्चा है, उसे आप कहें कि आपको पालक की सब्जी खानी है या आपको फास्ट फूड, तो वो फास्ट फूड की तरफ ही जाएगा. तो लेकिन बच्चे के लिए वास्तव में तो पालक की सब्जी अच्छी है. तो ये अवेयरनेस बच्चों में नहीं होती. बहुत सारे बच्चे डार्क में रहते हैं, हमेशा भटक जाते हैं. तो मुझे लगता है जब कंटेंट इतना सारा अवेलेबल हो जाता है तो बच्चों को फिर ये लगने लगता है कि सारा कंटेंट जो फ्री में अवेलेबल है ये तो बस सारा ही ऐसे है. दे पेंट द कंटेंट बाय द सेम ब्रश. और उसमें फिर बच्चा पेड कोर्सेज ढूंढता है. फिर वो सोचता है कि फ्री में तो सारा ही कंटेंट बेकार है. और मुझे लगता है, लेकिन अभी क्योंकि इंडस्ट्री स्टार्ट ही हुई है, कंसोलिडेट नहीं हुई है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लाइन में हम देखेंगे कि वो चैनल जो वास्तव में ऑथेंटिक है सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में होता है.
Right. I mean, people will, of course, start to identify the rotten apples in the basket and look at the fresh ones. So Dr. Gaurav Garg, kind of on this subject, what Sneha raised earlier, she said that, look, there are examinations that students are now cheating on, and it's become very easier because of technology. So do you think people, educationist institutes will have to rethink the way examinations are conducted? The idea of learning by rote and mugging up something and writing it out in a piece of paper in a classroom. Do we need a serious relook at how we conduct examinations? I think, Smita, it's a blind alley. It's like a cul-de-sac. हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज काम करेगी, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि बच्चों के ऊपर आज तनाव बहुत ज्यादा है तो एग्जाम को इजी कर दो, राइट? यानी कि एग्जाम को थोड़ा सा हम रिडंडेंट बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम ऐसा चाहते हैं कि बच्चे सोचे ही ना एग्जाम के बारे में, जैसा कि विदेशों में होता है। लेकिन अभी मैं कनाडा में एक पॉलिटिशियन से बात कर रहा था, हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था अपने चैनल पे, तो उन्होंने बताया कनाडा में अब एक नई समस्या ये है कि हाउ डू यू आप बच्चों को प्रेरित कैसे करें एक्सेल करने के लिए। जब मान लीजिए जब एग्जाम की इंपॉर्टेंस ही नहीं रही तो बच्चा पढ़ेगा क्यों, बच्चा एक्सेल क्यों करेगा, बच्चा कौशल अपना कैसे निखारेगा? तो मुझे लगता है एक दोनों में अब बैलेंस करके देखना होगा। इतनी बड़ी आबादी हमारी है, तो टू बी ऑनेस्ट यही जो हम चाहे अपने एजुकेशन सिस्टम को कितना भी क्रिटिसाइज करें, इतनी बड़ी आबादी में कोई और सिस्टम चल नहीं सकता। ये एक मुझे लगता है एक ड्रीम है हमारा कि मान लीजिए एक क्लासरूम हो तो वहां पे 100 बच्चे अगर हैं तो 10 पेंटर बने, 10 वहां पे चित्रकार बने, 10 वहां पे हैंडीक्राफ्ट वाले बने। एक बार कम से कम आप हैंडीक्राफ्ट वालों की, चित्रकारों की दशा तो देख लीजिए एक बार जाके। अभी सरकार को यहाँ पे हुनर हाट और ये सब का आयोजन करना पड़ता है कि चलो इस बहाने कुछ हैंडीक्राफ्ट बिक जाए, इस बहाने कुछ, आप जाके उनकी दशा देखिए एक बार। तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा जब आबादी है, अभी सोचिए कितने कम लोग हैंडीक्राफ्ट में हैं, तब जाके उनका ये हाल है। अगर आप सोचिए कि 10% भारत के बच्चे हैंडीक्राफ्ट, 10% चित्रकार और ये सब बन जाए, तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा इसमें एक एवोल्यूशन की जरूरत है। हमें सिर्फ एक, अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर, उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ है, कोई पॉलिसी पे कोई अभी तो सिर्फ नीति है, अभी तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है, कानून भी नहीं बना है। उसके बाद आप जानते हैं कभी भी किसी नीति से लेके कानून बनने तक और इम्प्लीमेंटेशन तक 5 से 6 साल का समय लगता है। और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2027, कोई कह रहा है 2030, यानी कि जो हमने लक्ष्य रखे हैं, जो हमने 2030 तक हमने कुछ लक्ष्य रखे हैं इसमें कि इतने % एनरोलमेंट होना चाहिए, इतने % ड्रॉप आउट रेट कम हो जाना चाहिए, जब तक ये लक्ष्य की डेट आ जाएगी तब तक तो हम इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। मुझे लगता है हमें कुछ बहुत रेडिकल इसमें करना होगा, लेकिन हमें फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उन पे भी नजर रखनी होगी। Dr. Gaurav Garg, you have been involved also with the job movement, asking for jobs, government job recruitments, till such time that jobs don't keep coming in, that we are not able to generate jobs. I mean, we can talk a lot about changing the education system, but what next after education if there are no jobs for children? This is a very complex question. I mean, creation of jobs. I think the jobs now, we are in a transition where you see that, first of all, you see the developed countries, right? Developed countries may, people don't go for government jobs. In America, it becomes, my friends who are in America tell me that there are no takers for the government jobs. But here it is the opposite. So I think if India is moving towards a more developed economy, so to say, then these jobs, it is only obvious that these will diminish. Okay. In such a scenario, government should make it very clear, rather than me saying it, it should be the government saying it, that look, the jobs will already be less, so that students are not kept in any dark. What they rather do is they announce the seats because they don't want to face the wrath of the public who are very aspirational towards the government jobs. और उसके बाद फिर they delay the process. So if there are 1,000 seats and in 1 year, then what they do is they make the process so long that those 1,000 seats are filled in 3 years. So that is net then 300 seats per year. So they are using these sort of tactics which are not helping the students, rather they are elevating them, even alienating them even further. Okay. And yeah, going forwards, I think government jobs will only diminish. Now, just yesterday, Niti Aayog has given a report where it has said that only 6 banks will not be privatized. Right? And और वो 6 बैंक कौन से हैं? वो बड़े-बड़े बैंक हैं, SBI, PNB, जो ऑलरेडी जिनके मर्जर हो चुके हैं, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, और ये जो 6 बैंक हैं, बस यही प्राइवेटाइज नहीं होंगे, बाकी सारे प्राइवेटाइज होंगे। और जब प्राइवेटाइज होंगे तो प्राइवेट वाले जो लोग हैं वो किस तरह से रिक्रूटमेंट करेंगे, इन सब पे भी सवाल खड़े होते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड ये देखना होगा कि भविष्य क्या है गवर्नमेंट जॉब्स का, कि आगे जाके अब लेटरल एंट्री आ रही है। फॉर एग्जांपल इस बार अब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया, सिर्फ 712 सीट है।
तो बहुत सारी सीट्स लेटरल एंट्री के थ्रू भी भरी जा रही हैं। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ देख रहे हैं जहां आने वाले समय में सारी सीट्स सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही भरी जाएंगी लेटरल एंट्री के थ्रू, या तो ये सवाल, इनका आंसर अभी देना मेरे लिए मेरे को लगता है मुनासिब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम इस पे क्लोज नजर रखेंगे। स्मिता, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा अगर टाइम है तो। 30 seconds, Gaurav. I have to end this show. सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। एक राज्य के हाई कोर्ट ने एक बार एक वर्डिक्ट दिया था कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पैनल में एक लड़की ने बात की कि स्कूल एडमिशन बहुत डिफिकल्ट हो गया है और स्कूलों की क्वालिटी पे शक है, तो कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी आईएएस अफसर हैं उस राज्य में, अफसरशाही में हैं, उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। अगर ऐसा होगा तो इन स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। I think this is also what is suggested about the healthcare system, that maybe, just to send out that important message, start using the government healthcare system instead of the private one.